Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students, today we will explore the facts about the entitled theme SR Theory of Learning. Dear students, SR Theory of Learning is propounded by one of the eminent behavioral psychologists, namely E.L. Thorndike. The full form of SR simply means stimulus and response. Dear students, according to E.L. Thorndike, all the learnings are a result of stimulus and response mechanism. It means the stimulus and response plays important role in order to perform the task or any activity. Dear students, E.L. Thorndike was basically American-born psychologist who born in 1874 and died in 1949 in New York. Dear students, E.L. Thorndike has written a book. That book is entitled as Animal Intelligence. According to E.L. Thorndike, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और एनिमल्स में भी सलाहियत है कि इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना. That is why, according to E.L. Thorndike, intelligence is not only the trait of human beings, but animals as well. E.L. Thorndike has performed number of experiments on various animals. For example, chickens, rats, and moreover cats. His famous experiment, which the E.L. Thorndike conducted on cats, that experiment is known as puzzle box experiment. On the basis of puzzle box experiment, E.L. Thorndike has given the concept of various laws of learning. As we know that E.L. Thorndike's primary laws and secondary laws of learning are very much important. Dear students, on the basis of these laws, the E.L. Thorndike finally formulated or propounded the theory. That theory is known as trial and error theory or connectionism theory. जैसे कि हम सब जानते हैं, the core concept of trial and error theory is practice makes a man perfect. यानी कि जितनी कि हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक लर्निंग भी आ जाती है और जो एरर्स होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाता है. Now in his famous experiment, that experiment is known as puzzle box experiment. Dear students, puzzle box experiment में उसने एक hungry cat को लिया and put the hungry cat inside the cage. और केज के बाहर piece of meat in the form of fish रखा. Cat was very much hungry, or due to the hunger, the drive has aroused in the cat. अब इस ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए केज से बाहर निकलना है. But it was difficult for the cat to open the cage. और ड्राइव की शिद्दत की वजह से the cat was continuously doing the random movements inside the cage. कभी कभार वो पाज राइट साइड देती थी, कभी कभार पाज लेफ्ट साइड देती थी, कभी कभार बिल्ली जो है वो पाज को यानी कि टू एंड फ्रो पोजीशन में मारती थी.
और कभी कभार वो आयरन के रॉड्स के बीच में से पाज को घुसाती थी, बट स्टिल इट सीम्स टू द कैट डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम द कैज। बाई चांस राइट डायरेक्शन पे कैट का पा लग गया और जो कैज है उसका डोर ओपन हो गया। कैट केम एंड got the reward in the form of fish and finally satisfied the hunger. Dear students, सेकंड अटेम्प्ट में ईएल थॉर्नडाइक ने फिर इस बिल्ली को भूखा रखा और इसी केज के अंदर बंद किया। नाउ एक एक्सपीरियंस बिल्ली ने हासिल की थी। आई मीन टू से यू कैट में एक लर्निंग हो चुकी थी। मूवमेंट करने से ये दरवाजा जो है इस केज का ये खुलता है। द एक्सपीरियंस वॉज रिसीव्ड और गॉट बाय द कैट। तो केज के बाहर जब उसने फिर पीस ऑफ मीट इन द फॉर्म ऑफ फिश देखा, वंस अगेन द कैट स्टार्टेड रैंडम मूवमेंट्स, और इतने जोर से वो रैंडम मूवमेंट्स करती थी, कभी कभार वो दांतों से भी केज के आयरन रॉड्स को भी काटने की कोशिश करती थी। एंड बाई चांस सही डायरेक्शन में लैच पे पाँव पड़ गया बिल्ली का और जो डोर है वो ओपन हो गया। कैट वंस अगेन केम एंड गॉट द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ फिश। इट मीन्स इन सेकंड टाइम्स कैट बिकेम सक्सेसफुल टू गॉट द रिवॉर्ड एंड फाइनली reduced the hunger drive. Dear students, here that we have to focus on one moot issue. पहले बार बिल्ली को दरवाजा खोलने में ज्यादा समय लग गया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में उसे इससे कम समय लग गया। थर्ड अटेम्प्ट में फिर से ये इस बिल्ली को कैज में रखता है ईएल थॉर्नडाइक और भूखा रखता है। नाउ बिल्ली ने ये चीज रियलाइज किया है कि ये कैज का जो डोर है ये ओपन होता है। द कैट वॉज कॉन्फिडेंट, तो वंस अगेन जोर से उसने रैंडम मूवमेंट्स किए और कम समय में कैट बिकेम सक्सेसफुल टू ओपन द केज। तो फाइनली कैट वंस अगेन रिड्यूस्ड द हंगर ड्राइव। आहिस्ता 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 cat learned completely how to open the door of cage and reduce the hunger drive. एक वक्त ऐसा आ गया जब भूखी बिल्ली को केज के अंदर रखते थे तो वो नैनो सेकंड्स में उस दरवाजे को खोलती थी, बिकॉज कैट कंप्लीटली लर्नड हाउ टू ओपन द केज, आई मीन टू से यू डोर ऑफ द केज without doing any error. That is why the theory is known as trial and error theory. Practice makes a man perfect. जितनी कि हम प्रैक्टिस करेंगे उतने फिर हमसे एरर्स कम हो जाते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं जब एक बच्चा साइकिल सीखना चलाना चाहता है तो पहले फ्रीक्वेंट फॉल्स का वो शिकार हो जाता है, इंजरीज भी लगती है, क्योंकि हैंडल साइकिल का पकड़ना नहीं आता है, पैडल देना नहीं आता है, बैलेंस मेंटेन करना नहीं आता है। लेकिन जब यही बच्चा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक प्रैक्टिस करता है तो ऑटोमेटिकली एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं, कम पड़ते हैं, एंड टाइम कम्स कि व्हेन द चाइल्ड गेट्स कंप्लीट मास्टरी हाउ टू लर्न टू राइड द मोटर साइकिल। इसी तरीके से कोई भी स्किल हमें सीखना पड़ता है। हर एक स्किल सीखने के वक्त हम एरर्स करते हैं, बट मोर विल बी द प्रैक्टिस, एरर्स गेट्स मिनिमाइज्ड। डियर स्टूडेंट्स, वी विल नाउ फोकस ऑन मेन क्रक्स ऑफ पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। नंबर 1, ड्राइव। Dear students, drive simply means when the need takes the state of heightened tension. For example,
जब एक ऑर्गेनिज्म भूखा होता है और वो भूख अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सेटिस्फाई नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली वो ड्राइव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, whenever there is drive, then there is do and die situation। चाहे वो हंगर ड्राइव है, चाहे वो थर्स्ट ड्राइव है, क्योंकि बोथ ड्राइव लीड्स एन इंडिविजुअल इन द स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अगर हंगर ड्राइव लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। एंड सेम इज द केस विद थर्स्ट ड्राइव। अगर एक ऑर्गेनिज्म का थर्स्ट ड्राइव सेटिस्फाई नहीं हो गया तो उसकी वजह से भी एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। एज वी नो दैट Abraham Maslow has already given the concept of basic needs. Basic needs are called the survival needs. And in survival needs, there comes the concept of food. There comes the concept of water. जैसे कि हमने सबने पढ़ा है एक स्टोरी that is known as thirsty crow, कि किस तरीके से एक कौवे को हद से ज्यादा प्यास लग गई और प्यास बुझाने के लिए द क्रो वॉज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन ऑर्डर टू फाइंड और सर्च द वाटर। एंड यू नो दैट हाउ देन आफ्टर द क्रो reduced the drive or satisfied the thirst drive. Same is the case with the hunger drive. Dear students, hunger drive किसी भी सूरत में reduce करना है. It was actually one of the botanists, namely W.B. Cannon. W.B. Cannon has given the concept of hemostasis. Hemostasis is the term in which the body of an organism maintains its state of equilibrium. यानी कि हमारी बॉडी का आउटपुट और इनपुट ये बैलेंस में रहना चाहिए। जब हमारी बॉडी में से ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाती है तो हमारे ब्रेन को आई मीन टू से यू हंगर सिग्नल्स मिलती है और हमारी बॉडी जो है ये मोटिवेटेड होती है टू रिड्यूस द हंगर ड्राइव। गोया कि हियर दैट एक्चुअली थॉर्नडाइक लेड एम्फेसिस द ड्राइव ऑफ कैट, क्योंकि कैट को बहुत दिन भूखा रखा। जो ये भूखी बिल्ली थी इसमें भूख की वजह से ड्राइव पैदा हो गया। दैट वाज दैट ड्राइव एज यू नो दैट इज नोन एज हंगर ड्राइव। हंगर ड्राइव इज नथिंग जब एक नीड को आप फुलफिल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं करते हो तो वो ड्राइव में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आफ्टर द ड्राइव देयर इज सेकंड की क्रक, दैट इज गोल। गोल इन द पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट इज द पीस ऑफ मीट विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ फिश। डियर स्टूडेंट्स, जो केज के बाहर पीस ऑफ मीट था इन द फॉर्म ऑफ फिश, दैट वॉज द गोल, गोल ऑफ द कैट। अब कैट को हंगर ड्राइव रिड्यूस करने के लिए गोल तक पहुंचना था, दैट वाज पीस ऑफ मीट। नंबर थर्ड, ब्लॉक। ब्लॉक, एज डियर स्टूडेंट्स, लिटरली इट मीन्स हिंड्रेंस, डिफिकल्टी फेस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, and in another sense we can say that it is block, it is impediment। जब हमें कोई काम करना होता है अगर उसके दरमियान कोई डिफिकल्टी आ जाएगी तो उसको हम ब्लॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बीच में हम पत्थर रखेंगे सड़क के बीच में, या बीच सड़क में हम दरख्त का एक मोटा सा टुकड़ा रखेंगे, तो उस सूरत में ड्राइवर को बहुत मुश्किल होता है गाड़ी चलाना। वो गाड़ी को नहीं चला सकता है जब तक कि वो ब्लॉक को नहीं हटाएगा। एंड सेम इज द केस विद हियर,
डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ब्लॉक वाज द केज, क्योंकि जो बिली थी वो केज में बंद थी। यहां से बिली में ऑलरेडी हंगर ड्राइव था, उस ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए उसे गोल तक पहुंचना था, दैट वाज पीस ऑफ मीट। लेकिन गोल तक पहुंचने के लिए जो केज का डोर है उसे ओपन करना था, और यहां से एक्सपेरिमेंटर ने केज के डोर को कंप्लीटली बंद करके रखा था, और वो डोर ओपन होता, बट इट नीडेड द कंप्लीट लर्निंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नंबर 4, रैंडम मोमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, random moments are those moments which are taken by the individual without having the knowledge or certainty कि in which direction I have to take the moves or initiatives. Those are called the random moments. और जो बिल्ली केज के अंदर थी, ये हर तरफ रैंडम मूवमेंट करती थी, क्योंकि रैंडम मूवमेंट का बुनियादी मकसद था कि किसी भी तरीके से जो ये केज है इसका डोर ओपन होना चाहिए, सो दैट द कैट विल गेट द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ पीस ऑफ मीट। नंबर 5, चांस सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, चांस सक्सेस सिंपली मीन्स अचानक कि बिली का पैर जो है वो सही डायरेक्शन में पड़ गया और बाय चांस केज का डोर ओपन हो गया, एंड टू ओपन द डोर बाय चांस, दैट इज नोन एज चांस सक्सेस। नंबर 6, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट्स मीन्स नाउ द कैट लर्नड हाउ टू टेक ए प्रॉपर मूवमेंट्स। किस तरीके से और किस डायरेक्शन में मुझे पाँव को मारना है, पाँव को हिलाना है। जो बिल्ली का पाँव है, किस तरीके से वो अपने पाँव को राइट डायरेक्शन में ले जाएगी ताकि जो वो डोर है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिल्ली ने अब सीखा है कि किस डायरेक्शन में पाँव को लेना है, तो उसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। नंबर 7, फिक्सेशन। Dear students, fixation means the sit-ups or moves or acts taken by the organism without committing any error. It is known as free from the error movement. यानी कि now time came जब एक बिल्ली में 100% perfection आ गई है, when the cat completely learned how to open the door. E.L. Thorndike as an experimenter, वो फिर बार बार इस बिल्ली को केज के अंदर रखता था, बट विदाउट डूइंग द एनी एरर द कैट कंप्लीटली लर्नड हाउ टू ओपन द डोर ऑफ द केज विदाउट कमिटिंग एनी एरर, सो दिस टर्म इज नोन एज फिक्सेशन। बिल्ली में फिक्सेशन हो गई, विदाउट कमिटिंग एनी टाइप ऑफ एरर द कैट कंप्लीटली लर्नड हाउ टू ओपन द डोर ऑफ केज एंड सेटिस्फाई or reduce the hunger drive. So these were the 7 sit-ups or key concepts which were incorporated or designed in the theory. That theory is known as trial and error theory. Dear students, these are the 7 key concepts of puzzle box experiment which was done by the E.L. Thorndike on cat. Now, we will focus on primary laws of learning. Primary laws of learning are also called the basic laws. The primary laws contains the fundamental importance. According to Thorndike, जो learning का concept है, that is purely based on primary laws. There are the 3 primary laws which were highlighted or described by the Thorndike. Number 1, law of readiness. Dear students, law of readiness actually depicts
द डिग्री ऑफ ईगरनेस पॉजिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। जहां तक कि थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज का सवाल है, लॉ ऑफ रेडीनेस डिस्क्राइब्स ईगरनेस, अर्ज और डिजायर टू लर्न। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म तब तक लर्न नहीं कर सकता है जब तक कि उसे काम करने के लिए एक ईगरनेस नहीं होगी, डिग्री ऑफ मोटिवेशन नहीं होगी। दैट इज वाई द लॉ ऑफ रेडीनेस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोटिवेशन। वी कैन ड्रैग द हॉर्स ऑन टू द शोर बट कैन नॉट मोटिवेट टू ड्रिंक। यानी कि हम घोड़े को नदी पे ले सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते हैं। इट मीन्स द हॉर्स मस्ट possess द eagerness और हॉर्स मस्ट बी डिजायरस टू ड्रिंक द वाटर, कि हॉर्स के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन का होना जरूरी है। जब तक कि एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑर्गेनिज्म में नहीं है, वो लर्न नहीं कर सकता है। इफ वी ह्यूमन बींग्स हैज टू लर्न एनीथिंग, लर्निंग के लिए ईगरनेस होनी चाहिए। आई मीन टू से यू मोटिवेशन होनी चाहिए। बिना मोटिवेशन के लर्निंग पॉसिबल नहीं है। इट इज द फर्स्ट प्राइमरी लॉ विच इज नोन एज लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर हमें म्यूजिक सीखना है या डांस सीखना है, हर कोई स्किल हम सीख सकते हैं। When we will look through the prism of behaviorism, behavioral psychologists lays emphasis that learning is based upon the motivation, कि एक काम सीखने के लिए डिग्री ऑफ डिफिकल्टी मैटर नहीं करती है प्राइमरीली। देन व्हाट मैटर्स? इट इज सिंपली द मैटर ऑफ डिजायर, इट इज सिंपली द मैटर ऑफ मोटिवेशन। अगर हम मोटिवेटेड होंगे तब हम डांस सीख सकते हैं। अगर हम मोटिवेटेड होंगे तब हम अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर नंबर ऑफ स्किल्स। चाहे हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्किल सीखना होगा या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्किल सीखना होगा, हर एक स्किल सीखने के लिए एक इंडिविजुअल के पास अर्ज होनी चाहिए, एक मोटिवेटेड बिहेवियर होना चाहिए। हर कोई ड्राइवर नहीं बन सकता है, हर कोई गाड़ी नहीं चला सकता है, बिकॉज इट इज कंडीशनल। दोज कैन बिकम गुड ड्राइवर्स, दोज कैन लर्न द स्किल्स हु possesses द मोटिवेशन, हु हैव द इंटरेस्ट, जिनमें क्यूरियोसिटी है लर्निंग की, क्योंकि क्यूरियोसिटी के बगैर हम नहीं सीख सकते हैं। इंटरेस्ट और डिजायर्स के बगैर हम कोई भी काम नहीं सीख सकते हैं। एक लर्नर अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकता है भले उसके पास कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज है। अचीवमेंट हासिल करने के लिए एक लर्नर के पास इंटरेस्ट होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए, यानी कि तब पॉसिबल है वो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सीलेंस दिखा सकता है या उस फील्ड के ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स हासिल कर सकता है। हम कभी भी गोल को हासिल नहीं कर सकते हैं विदाउट हैविंग द ईगरनेस, विदाउट हैविंग द मोटिवेशन। Dear students, the law of readiness is purely based upon the interest and urge. एक सर्जन तब अच्छा सर्जन बन सकता है जब वो सर्जरी में इंटरेस्ट लेगा। अदरवाइज वन कैन नॉट लर्न द स्किल ऑफ सर्जरी विदाउट हैविंग द इंटरेस्ट और मोटिवेशन। एंड इफ वी विल मेक ए इंट्रोस्पेक्शन, अगर हम अपनी जगह खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, वही काम हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं जहाँ पर हमारी विल बन जाती है, जहाँ पर हमारी इंटरेस्ट बन जाती है। जिस काम में हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो अगर वो उस काम का नेचर
सिंपल भी होगा, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत कठिन और कठोर होता है उस काम को सीखना। द थॉर्नडाइक primarily lays the emphasis in order to learn anything the organism must be ready. उसके बिहेवियर में रेडीनेस होनी चाहिए। Dear students, after the law of readiness, which is also known as law of motivation, there is another famous primary law which is known as law of exercise. Law of exercise is the second primary law of Thorndike. This law is also known as law of practice. There is the famous quote, practice makes a man perfect. As per the opinion of Thorndike, यानी कि कोई भी स्किल सीखने के लिए या लर्निंग के लिए प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। पहले एक इंडिविजुअल के पास इंटरेस्ट होनी चाहिए कोई काम करने के लिए, और अगर उसे इंटरेस्ट है, विल है, डिजायर है, तो सेकंड इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के बगैर परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। पहले म्यूजिक सीखने के लिए एक इंडिविजुअल के पास इंटरेस्ट होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट है, सेकंड इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द प्रैक्टिस। विदाउट द प्रैक्टिस वन कैन नॉट बिकम द गुड म्यूजिशियन, यानी कि म्यूजिक कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं हो सकती है। हम म्यूजिक का फन नहीं सीख सकते हैं इफ वी आर लैकिंग द प्रैक्टिस और इफ वी विल नॉट परफॉर्म द ऑपरेशंस। म्यूजिशियन बनने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर किसी को ड्राइविंग स्किल सीखना है, प्राइमरी इज रेडीनेस इन ऑर्डर टू लर्न द ड्राइविंग स्किल, लेकिन देन आफ्टर सेकंड इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द प्रैक्टिस। उसके बाद प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वन कैन नॉट लर्न द स्किल ऑफ ड्राइविंग। और कोई भी स्किल क्यों ना होगा, कोई भी लर्निंग क्यों ना होगी, हर एक लर्निंग के लिए प्रैक्टिस का होना जरूरी है। दैट इज वाई law of exercise is also known as law of practice. Dear students, Thorndike has bifurcated or classified the law of exercise into two further subcategories. Number one, law of use, and number second, law of disuse. Dear students, law of use simply means repetition of the activity is called the law of use. जब एक एक्टिविटी को आप बार बार रिपीट करते हो, कंटिन्यूअसली रिपीट करते हो, तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ यूज। फॉर एग्जाम्पल, कोई बार बार गाड़ी चलाता है, कंटिन्यूअसली गाड़ी के साथ अटैच्ड है, सो हियर द लॉ ऑफ यूज इंप्लीमेंट्स। Dear students, that is why law of use always leads towards the improvement. हमारी लर्निंग जो है वो उतनी इफेक्टिव बनती है, गोल ओरिएंटेड बनती है, प्रोडक्टिव बनती है, हमारे काम काज में एक्यूरेसी आती है। इट इज प्योरली डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ यूज। इसीलिए कि हम अपना मोबाइल नंबर ऐसे ही बिना डायरी पे नोट करके याद रखते हैं, क्योंकि हर दिन हम अपना मोबाइल नंबर कहीं ना कहीं डायल करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़बानी अपने सेल फोन का नंबर याद रहता है। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ यूज। एंड आफ्टर द लॉ ऑफ यूज देयर इज द सेकंड सब लॉ विच इज नोन एज लॉ ऑफ डिसयूज। Dear students, law of disuse simply means when you will not repeat the activity again and again. I mean to say you, जब हम टास्क को again and again repeat नहीं करेंगे, तो उस law को कहते हैं law of disuse. Law of use leads towards the learning and law of disuse
लीड्स टुवर्ड्स द अनलर्निंग। क्योंकि लॉ ऑफ डिसयूज जो है इट इज बेस्ड ऑन द फॉरगेटफुलनेस। हम भूल जाते हैं। अगर हमने कोई चीज लर्न ऑलरेडी किया है तो उसकी प्रैक्टिस हम कंटिन्यूअसली नहीं करेंगे। वी फॉरगेट द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समय के वक्त तक हमें अपना फोन नंबर जबानी याद था, लेकिन लॉन्ग पीरियड तक हमने अपने फोन नंबर को डायल नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वी फॉरगेट दैट फोन नंबर। एंड सेम इज द केस इन टर्म्स ऑफ स्किल कॉम्पिटेंसीज। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंपैरिजन करेंगे दो ड्राइवर्स के रिलेटेड, एक वो ड्राइवर जो कंटिन्यूअसली ड्राइविंग करता है एज कंपेयर टू दैट ड्राइवर जिसने ऑलरेडी गाड़ी सीखी है लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से वो प्रैक्टिस नहीं करता है। कीपिंग इन व्यू द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर बिलीव्स जिस ड्राइवर ने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस की है और कंटिन्यूअसली ड्राइविंग के साथ जुड़ा है 100% वो परफेक्ट होगा एज कंपेयर टू दैट वेरी ड्राइवर जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से ड्राइविंग से दूर है, प्रैक्टिस से दूर है। इसीलिए so far as law of disuse is concerned, we forget the things if we will detach ourselves from the practice. It means law of exercise is based upon law of use and law of disuse. Dear students, इसीलिए वो learners जो continuously attached रहते हैं अपने एजुकेशन के साथ लर्निंग मोड में, तो वो हाईएस्ट अचीवर्स बन जाते हैं। उनकी एक्सीलेंस ऑलवेज हाई होती है एज कंपेयर टू दोज लर्नर्स कि जो डिटेचड रहते हैं लर्निंग से। उन्हें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज देयर इज द स्कोप फॉर द लॉ ऑफ डिसयूज। आफ्टर द लॉ ऑफ एक्सरसाइज देयर इज द थर्ड लॉ which is known as law of effect. Dear students, law of effect simply means when the response is followed by the reward. That law is known as law of effect. यानी कि जब हमारा रेस्पॉन्स रिवॉर्ड को फॉलो करता है, at that time we can say that it is law of effect. Dear students, law of effect is also known as law of satisfaction. Now, एक ऑर्गेनिज्म को कब सेटिस्फैक्शन मिलती है और एक ऑर्गेनिज्म को कब डिससेटिस्फैक्शन मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, काइंडली नोट इट, जो लॉ ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है इट इज रिलेटेड टू द डिमोटिवेशन व्हाइल एज लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू द फर्दर मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, बच्चे ने करेक्ट जवाब दिया सवाल का, क्वेश्चन का, विच हैज आस्क्ड और पोज्ड बाय द टीचर। अगर टीचर ने रिवार्ड दिया इनकरेजमेंट की सूरत में, तो लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगी। यानी कि जो बच्चा है वो फर्दर क्यूरियोसिटी दिखाएगा कि लर्न करने की। अगर अब टीचर ने कोई भी रिवार्ड नहीं दिया तो बच्चा जो है उसे डिससेटिस्फैक्शन मिल जाएगी और उसकी जो लर्निंग है वो भी धीरे धीरे कम पड़ जाएगी। इसीलिए थॉर्नडाइक हैज स्ट्रांगली थ्रस्टेड ऑन इट कि लर्निंग के लिए लॉ ऑफ इफेक्ट का होना जरूरी है। यानी कि रिवार्ड और पनिशमेंट, रिवार्ड लीड्स द सेटिस्फैक्शन एंड पनिशमेंट गिव्स द डिससेटिस्फैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, जब कोई ड्राइवर ट्रैफिक रूल या नॉर्म वायलेट करता है तो उसे पनिशमेंट मिल जाती है ट्रैफिक ऑफिसर के जरिए, तो उस बिहेवियर को वो फिर रिपीट नहीं कर पाता है। इट मीन्स दैट डिससेटिस्फैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट गिवन बाय द ट्रैफिक ऑफिसर। और जब हम कोई काम करते हैं और हमें इंकरेजमेंट मिलती है, हमें रिवॉर्ड मिलता है, तो हमें अर्ज रहती है कि हम इस काम को और अच्छी तरीके से करेंगे। इसीलिए थॉर्नडाइक मेंशन्ड कि लर्निंग के लिए लॉ ऑफ इफेक्ट का होना जरूरी है। डियर स्टूडेंट, सपोज अगर बिल्ली को रिवॉर्ड नहीं मिलता
it means there was no chances for the further learning. That is why law of effect is one of the important laws among these three laws. Dear students, this was all about the basic indicators of Thorndike's trial and error theory. Especially, we have highlighted about the primary laws of learning. In next lecture, we will discuss Thorndike's secondary laws of learning and other related content. And this theory has been designed from one of the schools of psychology that is known as bond psychology. Because according to Thorndike, there is the bond, I mean to say you connection between the stimulus and response. Stimulus is nothing. It is the environmental substance which evokes the responses from the organism. And response is actually the reaction towards the stimulus. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.